हेलो जी, सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर लर्नर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीट इज माइंड में। और आज हम करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पार्ट 2, जहाँ पे हम आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज एविल क्वाड्रेट। ठीक है, चार क्वाड्रेट इज अ चार, कोई भी चीज अगर जो फोर के कॉम्बिनेशन में होते हैं तो हम लोग क्वाड्रेट कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग चार फैक्टर स्टडी करोगे। देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हाउ टू कंजर्व योर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, दिस इज अ टेलीग्राम हैंडल। अगर जो आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज सारे अपडेट्स आप लोगों को इसी के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। देन दिस इज चैप्टर नंबर 15, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। दो ही पार्ट चैप्टर हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, स्टार्टिंग विद योर जो हम लोग कल कर रहे थे योर बायोडाइवर्सिटी लॉस, है ना, बायोडाइवर्सिटी लॉस पढ़ रहे थे ना हम लोग कल, उसी का ही पार्ट है ये। नाउ आप लोग स्टडी करोगे कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसके मेजर कारण क्या है, क्यों बायोडाइवर्सिटी इतनी लॉस्ट हो रही है हमारी। In general, loss of biodiversity in region may lead to a decline in a plant production, lowered resistant environment perturbations such as drought, and increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use, and pest disease cycles. Cause of biodiversity losses: the accelerated rate of the species extinction that the world is facing now are largely due to human activities, and these human activities are known as anthropogenic activities. There are four major causes. The Evil quadrant is a sobriquet used to describe them. ठीक है, एविल एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने प्रपोज किए थे, तो इसे कहा गया एविल क्वाड्रेट। हैबिटेशन लॉस, सबसे पहले जो आपका फैक्टर दैट इज योर habitat loss and fragmentation. This is the most important cause driving animal and plant to extinction. The most dramatic example of habitat loss came from the tropic rainforest. One covering more than 14% of the Earth's land surface, these rainforests now cover not more than 6%. They are being destroyed very fast. By the time you finish reading this chapter, 1,000 more hectares of rainforest would have been lost. The Amazon rainforest, it is so used that it is known as lungs of planet. तो अगर जो पूछा गया name the forest which is known as your lungs of planet, that is the Amazon rainforest, harboring probably millions of species. Harboring मतलब रहने की जगह दे रहा है। In is being cut and cleared for cultivating soybeans. और किस लिए आप उगा रहे हो? क्योंकि आपको सोया चाम खानी है, सोयाबीन खानी है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कट कर रहे हो, जो कि आपको ऑक्सीजन दे रहा है इतनी अबंडेंट में। और फॉर द कन्वर्जन टू ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल, या फिर पालतू जानवरों को पालने के लिए। Beside total loss, the degradation of many habitat by pollution also threaten the survival of many species. When large habitats are broken into small fragments due to various human activities, mammals and the birds requiring large territories and certain animals with migratory habitat are badly affected, leading to the population decline. फ्रेगमेंटेशन मतलब जब आप लोग सपोज एक बहुत बड़ा खेत था, आपने उसमें से आधी जगह बेच दी और आधी जगह आपने अपने पास रखी, तो जो आधी जगह आपने बेची वहां पे भी कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म तो रहता था। अब जो वो रहता था उसकी जगह खत्म कर दिया आप लोगों ने, उसे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। दिस इज हाउ हैबिटेट का लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा यूज करना, नीड से ज्यादा यूज करना। ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन द नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। अब इसका जनरल एग्जांपल लेते हैं, अगर जे आप लोग जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते तो आपको दिक्कत होती है ना। सिमिलरली आप लोग अगर एक स्पीशीज को जितने आपको रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा यूज कर लेते हो, उनको भी दिक्कत होती है, वो खत्म हो जाती है, उनको दिक्कत नहीं होगी, वो सीधा खत्म ही हो जाएगी। बट नीड टर्न्स अ ग्रीड, जो आपकी जरूरत है वो लालच में बदल जाती है। इट लेड टू, अल्टीमेटली इससे क्या होता है, इट लेड टू ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओवर एक्सप्लोटेशन मतलब बहुत बुरी तरह से यूज होना उनका। Many species extinction in last 500 years, this is Steller sea cow, passenger pigeon, were due to overexploitation of humans. Presently, many marine fishes population around the world are over harvested, endangering the contribute existence of some commercially important species. ठीक है, तो जो आप लोग खाने में फिश यूज करते हो ना, उसकी कमी होने लगी है थोड़े टाइम में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से खाइए थोड़ा सा। ठीक है, भगवान ने फूल ये पौधे पत्तियां बनाई है खाने के लिए, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, एलियन स्पीशीज इन्विजन। एलियन मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म।
स्पीशीज मतलब ऐसी कोई स्पीच जो कि यहाँ की नहीं है, बाहर की है कहीं, और उसको आपने यहाँ पे लाके डाल दिया, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, जो यहाँ पे रह ही नहीं सकती, बट उससे अल्टीमेटली क्या होता है, दूसरी स्पीशीज खराब होती है। When alien species are introduced in unintentionally and deliberately, sorry यार ये वर्ड ना, deliberately, ठीक है, for whatever purpose, and some of them turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species. Indigenous मतलब जो कि उस जगह की पर्टिकुलर स्पीशीज होती है। The Nile perch introduced in the Lake Victoria. First example, the Nile perch introduced in the Lake Victoria in East Africa led eventually to the extinction of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish in the lake. ठीक है, किसकी वजह से नाइल पर्च बाहर से लाई गई और एक लेक में डाल दी। उस लेक में पहले कौन सी फिश रहती थी? चिचलिड फिश। अब क्या हुआ, जो नाइल पर्च थी उसने चिचलिड फिश को खत्म कर दिया। You must be familiar with the environmental damage caused and threat posed to our native species by invasive weed species like carrot grass, Parthenium. स्टडी पता होगा आप लोगों ने स्टडी किया होगा पार्थेनियम, है ना। पार्थेनियम क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है अपने रूट के थ्रू, जिसकी वजह से उसके आसपास कोई पौधा ग्रो ही नहीं हो सकता। लेंटाना एंड वाटर हाइकिंथ, टेरर ऑफ बंगाल। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश Calasia garipinus for aquaculture purpose is posing a threat to indigenous cattlefish, catfishes in a rivers। ठीक है, तो आपको बहुत सारे एग्जांपल दे देगा एलियन स्पीशीज के, आपको सारे एग्जाम होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कोएक्सटेंशन। When a species become extinct, the plant and the animal species associated with it in its obligatory way also become extinct। अब सपोज आप किसी पे डिपेंडेंट हो और वो डिपेंडेंट मतलब बंदा खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है उस लोगों की। ठीक है, आप फाइनेंशियली किसी बंदे पे डिपेंडेंट हो और उस जो पर्सन है अनफॉर्चुनेटली ही और शी डाइस, अब आप कहाँ से पैसा लाओगे, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है कि अगर देख सपोज अब आपको मलेरिया के आप लोगों ने साइकिल स्टडी की है, सपोज मलेरिया के अगर हम लोग फीमेल एनाफीस को ही मार देते हैं, पूरी उसकी स्पीशीज ही खत्म कर देते हैं, मलेरिया होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जो आपका प्लाज्मोडियम है वो उसके अंदर ग्रो करता है। अब जब स्पीशीज ही नहीं बचेगी फीमेल एनाफीस मॉस्किटो, तो आप कहाँ पे प्लाज्मोडियम ग्रो करेगा? तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लाज्मोडियम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपने एक खत्म किया अपने लिए, बट उससे दो को इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, दो से ज्यादा को भी पड़ सकता है कई बार। ठीक है, when a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasite also meet the same fate। Another example in case of a co-evolved plant pollinator mutualism, यूका वाले आपने देखा था ना, एक आपने वो स्टडी किया था अभी जस्ट पीछे इकोलॉजी में ही, आपका सूडो कॉपुलेशन। तो अगर जिस सूडो कॉपुलेशन वाले केस में वो फ्लावर की स्पीशीज हम लोगों ने खत्म कर दी, तो जो वो है ना इंसेक्ट जो कि सूडो कॉपुलेट करता था आके, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ वन इनवेरिएबली लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अदर। ठीक है, एक के खत्म होने से दूसरा अपने आप खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब किसी चीज को प्रिजर्व करना, बचाना। कैसे बचा सकते हो आप बायोडाइवर्सिटी को अपनी? व्हाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? There are many reasons, such obvious and other not so obvious, but all equally important. They can be grouped into three categories: narrow, utilitarian, broad utilitarian and ethical। ठीक है, तीन है, narrow utilitarian, broad utilitarian and ethical। The narrow utilitarian argument for conserving biodiversity are obvious। ठीक है, ये reasonable होते हैं। Human derive countless direct economic benefit from the nature's food, जैसे सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे टैनिन्स, लुब्रिकेंट, डाइज, रेजिन, परफ्यूम्स। दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो कि आप क्लास +1 में पढ़ के आ चुके हो। एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। More than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from the plant, and 25,000 species of plant contribute to the traditional medicine used by native people around the world। मतलब जो आयुर्वेदा को कहते हो, जैसे आप लोग ना, आयुर्वेदा इज समथिंग जहाँ पे आप लोग नेचुरल चीजों को यूज करके मेडिसिन बनाते हो। Nobody know how many more medicinal useful plants there are in the tropical rainforest waiting to be explored। With increasing resources put into bioprospective, exploring molecular, genetic and species level diversity for product of economic importance। This is a definition of bioprospecting। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं छुपी हुई डेफिनेशन दे रखी है आप लोगों को। ठीक है, notions
endowed with rich biodiversity can accept to reap enormous benefit. ठीक है. सेकेंड इज योर ब्रॉड यूटिलिटी, मतलब जो बहुत जिनका जो हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है अगर ये नहीं कंजर्व किए गए, तो ब्रॉड यूटिलिरियन. The broad utilitarian argument says that a biodiversity play a major role in many ecosystem services that nature provide. है ना. The fast dividing Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of total oxygen in the earth atmosphere. जो आपकी 20% ऑक्सीजन आप लोगों को मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? अमेज़न फॉरेस्ट से. कैन वी पुट एन इकोनॉमिकल वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय नेचर? क्या हम इसकी इकोनॉमिक वैल्यू पुट कर सकते हैं? You can get some idea by finding out how much your neighborhood hospital spend on a cylinder of oxygen. Pollination, without which plant cannot grow, give us seed or fruit, is another service. Ecosystem provide through pollinators, layer, bees, blubber bees, birds, bats, etc. What will be the cost of accomplishing pollination without help from natural pollinators? There are some intangible benefits that we derive from the nature. The aesthetic pleasure of walking together thick wood, watching spring flower in a full bloom, or watching up with a bulbul song in the morning. Can we put a price tag on such a thing? No, we can't put price tag क्योंकि वो नेचर दे रहा है ना. बट अगर ये प्राइस टैग लग गया ना इन पे, सही बता रहा हूँ, मतलब जो अमीर से अमीर लोग हैं ना, they will be vanished. The ethical argument for conserving biodiversity relates to what we owe to the million of plant, animal, and microbe species to with whom we share this planet. Philosophically or spiritually, we need to realize that every species have an intrinsic value, even if it may not be of current or any economic value. So, ना ये नहीं है कि जो स्पीशीज हमारे लिए यूजफुल नहीं है वो किसी के लिए नहीं है, हो सकता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल हो. We have a moral duty to for care for their well-being and pass on our biological legacy in a good order to future generation. है ना. जो आज हमें मिल रहा है वो हम दूसरों को सौंप के जाए, है ना. ये नहीं कि अगर जो आप सोच रहे हो कि हम आए तो हम तो सब कुछ खत्म करके जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस थिंकिंग शुड नॉट बी देयर. ठीक है. बिकॉज आपकी ही नेक्स्ट जनरेशन है जो कि यहाँ रहने वाली है, तो उनको सर्वाइवल के लिए कुछ चाहिए होगा और वो आप ही को ही देना पड़ेगा उनको. When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all levels is protected. We save the entire forest to save tiger. This approach is called the in situ. In situ is something जहाँ पे आप लोग उनके natural environment में उसे save करना try कर रहे हो, है ना. In मतलब उनके अंदर. However, when there is a situation where the animal or plant is endangered or threatened, organism facing a very high risk of extinction in a wild in the near future, needs urgent measure to save in extinction such as एक्स सीटू. एक्स मतलब बाहर, जिंदगी से जा चुका है बाहर, तो एक्स मतलब जिसको आप लोग अपने बनाए हुए एनवायरनमेंट में रखोगे. एक है जिसको आप लोग उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में रख रहे हो, उसे हम लोग कहते हैं इन सीटू. और एक है जब आप उसको एक्स मतलब बाहर एनवायरनमेंट में रख रहे हो ताकि उनकी अच्छे से केयर करी जा सके. मूविंग ऑन टू इन सीटू कंजर्वेशन. Faced with a conflict between development and the conservation, many nations find it unrealistic and economic non-feasible to conserve all their biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from the extinction far exceed the conservation resources available. On a global basis, this problem have been addressed by the eminent conservatists. They identified for the maximum protection certain biodiversity hotspots, region with a high level of species richness and high degree of endemism. Endemism क्या होता है? These are the special स्पीशीज जो कि सिर्फ एक ही जगह पाई जाती है और उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एनवायरनमेंट में, कहीं और नहीं मिलेगी आप लोगों को. दैट इज स्पीशीज कन्फाइंड टू अ रीजन नॉट फाउंड एनी एल्सवेयर. इनिशियली 25 biodiversity hotspots were identified but subsequently 9 more have been added to the list. 25 से और अब 9 और ऐड करोगे तो कितना मतलब हुआ? 25 26 28 29 30 31 32 33 34 हॉटस्पॉट्स आपके पास अवेलेबल है इस समय पे. ठीक है. ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखा है ब्रिंगिंग द टोटल ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू 34. ठीक है, ये रिसेंट डाटा लग रहा है मेरे को. These hotspots are also regions of accelerated habitat loss. 3 of these hotspots are जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करते कहीं ना कहीं, वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो ब्रह्मा एंड हिमालयस. Cover our country's exceptionally high biodiversity regions. Although all the biodiversity hotspots put together cover less than 2% of Earth's land area, the number of species they collectively harbor is extremely high.
and strict protection of these hotspots could reduce or the ongoing mass extinction by almost 30%. In India, ecologically unique and biodiversity-rich regions are legally protected as biosphere reserve. It आपने पढ़ा hotspots. Second आता है आपको biosphere reserves, national parks and sanctuaries. India now has 14 biosphere reserves, 90 national parks and 448 wildlife sanctuaries. ये डाटा याद करना जरूरी है. वे नीट में आजकल डाटा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. India has also a history of religious and the cultural tradition that emphasized protection of nature. In many cultural traits of forest were set outside, and all the tree and wildlife within were venerated and give total protection. Such scared groups are the group of people जो कि नेचर को प्रोटेक्ट करने में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं. आर फाउंड इन खासी एंड Jentia Hills in Meghalaya, Aravali Hills in Rajasthan, Western Ghat regions of Karnataka and Maharashtra, the Sarguja, Chanda and Bastar area of Madhya Pradesh and Meghalaya. The sacred groves are the last refuge for the large number of rare and threatened species. ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं, एक पूरे आपकी जगह में ना एरिया रिजर्व कर देते हैं कि यहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता, यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी होगी नहीं, यहाँ पे सिर्फ कौन रहेगा, एनिमल्स रहेंगे. सेकेंड इज योर एक्स टू कंजर्वेशन. एक्स मतलब बाहर रख ले, वो उनके नेचुरल एनवायरमेंट से उनको बाहर लेके जा रहे हैं. जैसे आपके वाइल्ड लाइफ जूज होते हैं, जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, जू में आप गए हो गए आई होप सो, तो वहाँ पे क्या है, आप टाइगर देख रहे हो, अब टाइगर का नेचुरल एनवायरमेंट तो नहीं है, वो वहाँ पे उसे रखा गया है बाई चांस, मतलब जबरदस्ती उसे बांध के रखा गया है, बंद करके रखा गया है. दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है. In this approach, threatened animals and plants are taken out from their natural environment, habitat, and placed in the special setting where they can be protected and given special care. Zoological park, botanical garden, wildlife safari parks serve this purpose. ठीक है, अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क दोनों अलग अलग है. ठीक है, do not mix them. There are many animals that have been extinct in the wild but continue to be maintained in the zoological park. In recent years, ex-situ conservation have advanced beyond keeping threatened species in enclosure. Now, gametes of threatened species can be preserved in a variable and fertile condition for long period using cryopreservation. आप लोग स्टडी करके आ चुके हो cryopreservation. It is बहुत लो टेम्परेचर, दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस में किसी चीज को प्रिजर्व करना अंडर लिक्विड नाइट्रोजन. Eggs can fertilized in vitro. In vitro मतलब बॉडी के बाहर. Plants can be propagated मतलब grow using tissue culture method. Seed of different genetic strains of commercial important plant can be kept for a long period in a seed bank. टिश्यू कल्चर में जो पार्ट प्लांट यूज होता है टू ग्रो अ कंप्लीट प्लांट, उसे क्या कहते हैं, एक्स प्लांट, है ना. और माइक्रो प्रोपगेशन की वजह से हम लोग बहुत सारे वो बनाते हैं, और जो प्लांट आते हैं हमारे पास हम लोग क्या कहते हैं, सोमा क्लोन्स, है ना. ये टिश्यू कल्चर की रिवीजन करा दी मैंने आपको. Biodiversity knows no political boundaries, and its conservation is therefore a collective responsibility of all nations. सबकी responsibility है. The historic conviction of biological diversity, the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992, called upon all the nations to take up appropriate measures for the conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit. In a follow-up, the World Summit on Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg, South Africa, where 190 countries pledged, ठीक है, pledged लेना, their commitment by to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local level. तो क्या हुआ, जॉन्सबर्ग में मीटिंग हुई जहाँ पे 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने कहा, कमिटमेंट क्या ली कि हम 2010 तक जो एट प्रेजेंट रेट ऑफ रिडक्शन चल रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ स्पीशीज का रेट चल रहा है, उसको हम लोग 50% कम कर देंगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, है ना, इतना कम है आज के लिए, 20 मिनट का लेक्चर हुआ है. जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ब्रिंग मोर स्लाइड्स, है ना, एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट. It is just downloading. Now once it is downloaded, we will be done to display the slides. ठीक है.
It is taking very long time to download. चलो let us take. So meanwhile अगर जी कोई डाउट है you can get into it है ना, आप लोग डाउट फॉर्म भर सकते हैं इतने, अगर आपको कोई डाउट है तो you can reach out to us immediately है ना. It is taking a little bit more time, don't worry. बेसिकली पीपीटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुई कि नहीं यहाँ पे, नहीं तो मैं पीपीटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता. माइट बी डिफिकल्ट. तो देखते अगर जो ऐसे ही चलते हैं ना, बट इस पे आई कांट राइट. ठीक है, एक चीज ये देख लेना, आई कांट राइट ऑन दिस. एथिकल इश्यूज नहीं हुए ना अभी, एथिकल इश्यूज, एथिकल आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए. चलो फिर एथिकल आर्ग्यूमेंट्स खत्म करके फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे. ओके, एथिकल आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों को दिखाई देते हैं अभी आपकी स्क्रीन पे, ये रहे एथिकल आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, ओके. सो स्टार्ट करते हैं एथिकल आर्ग्यूमेंट से. फुल स्क्रीन हो जाती है? नहीं, ओके. हाँ, स्लाइड डाउनलोड हो गई है, जस्ट गिव अ मिनट. तो यहीं से पढ़ते हैं. The ethical argument for conserving biodiversity relates to what we over million of o. ओके, ये हो चुका है ना, हो चुका है, हो चुका है. ओके ओके फाइन. इसके बाद NC2 XC2 सब कुछ हो चुका है. ओके, वी आर लेफ्ट विद समरी. समरी रीड आउट करते हैं. ठीक है. Since life originated on Earth nearly 3.8 billion years ago, there have been enormous diversification of life form on Earth. Biodiversity refers to the sum of total diversity that exists at all the level of biological organization. Of particular importance in the diversity in genetic species and ecosystem level, and conservation efforts are aimed at protecting diversity at all the levels. More than 1.5 million species have been recorded in the world, but there might still be nearly 6 million species on the earth waiting for to be discovered. और एक किसके अकॉर्डिंग एस्टिमेशन है? रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग. ठीक है, साइंटिस्ट का नाम याद रखना. Of the named species, more than 70% of the animals, of which 70% are insect, है ना. 100 में से 70 insect होते हैं, या फिर 10 में से 7 insect होएगा आपके पास. The group fungi have more species than all the vertebrate species combined in India, with about 45,000 species of plant and twice that of animal. It is one of the 12 mega diversity countries of the world. Species diversity on the earth is not uniform distributed but shows interesting pattern. It is genetically highest in terms of tropic and decreased toward the poles. Important explanation for the species richness of the tropics are: tropic have more evolutionary time, they provide a relative constant environment, they receive more solar energy which contribute to a greater productivity. Species richness is also function of area of a region and the species Bohm Halbert का जो curve था आपका, species area relationship is generally a rectangular hyperbolic function. It is believed that the communities with a high diversity tend to less variable, more productive and more resistant to the biological inventions. Earth fossil history reveals incidents of mass extinction in the past, but the present rate of extinction largely attributed to human activities are 100 to 1000 times higher. ठीक है. Nearly 700 species have become extinct in recent time, and more than 15,500 species, of which greater than 650 are from India, currently face the threat of extinction. The cause of high extinction rate at the present include habitat, particularly forest loss and fragmentation, overexploitation, biological invasion and coextinction. और अगर क्वेश्चन आता है ना, which of the four is major, तो habitat loss and fragmentation is one of the major. आप लोग वही लिख के आओगे. ठीक है. Earth's rich biodiversity is vital for the very survival of mankind.
The reason for conserving biodiversity arms narrow utilitarian, broad utilitarian and ethical. Besides the direct benefit food, fiber, firewood, pharmaceutical, etc., there are many incident benefits we receive to the ecosystem services such as pollination, pest control, climate moderation, and flood control. We also have a moral responsibility to take good care of Earth's biodiversity and pass it on to the good order to our next generation. है ना, अच्छे से संभाल के रखो तभी अच्छे से आगे दे पाओगे. Biodiversity conservation may be in situ as well as ex situ. In the in situ conservation, the endangered species are protected in their natural habitat so that the entire ecosystem is protected. Recently 34 biodiversity hotspot, 25 पहले तो नो ऐड हो गए थे बाद में, in the world have been proposed for intensive conservation efforts. Of these, 3 Western Ghats, Sri Lanka, Himalaya and Indo-Burma cover India's rich diversity. Our country's in situ conservation efforts are reflected in the 14 biosphere reserve, 90 national park and more than 450 wildlife sanctuaries and many sacred groves. Ex situ conservation methods include protective maintenance of threatened species in the zoological park and botanical garden, जो कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करके आए थे, हर्बेरियम वगैरह. These are the something which are taxonomical aids, जिसे आप कहते हो botanical garden, है ना. In vitro fertilization, tissue culture, propagation and preservation of the gametes. और भी है क्या अभी समरी? नहीं, ठीक है. So that's all about chapter, है ना. In case आप लोग कोई doubt हो तो please reach out to us using the doubt form, है ना, so that your doubts can be clear in a very easy manner, ठीक है. या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या फिर आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है. So that's all about today. Thank you, goodbye and finally we are done with the chapter. इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक लास्ट चैप्टर बचा है, दैट इज अगेन अ वेरी लेंथी चैप्टर जिसे हम लोग जल्दी से कवर करने की ट्राई करेंगे. थैंक यू.